Assalamu alaikum, sir, and a very warm welcome to Ignited Minds. Today, we are glad to have with us Zahid Rehman, who has scored rank 68 in the recent results of JKS exam. Today, I'll be asking a set of questions to our guest, and I hope this session will be very informative to all of us. First of all, I would like to thank our guest to be here today. Thank you so much, sir, for giving your valuable time here. Thank you so much, sir. Walaikum salam. First of all, I'm grateful to you for giving me this platform to discuss my strategy with respect to the civil service examinations. Thank you, sir. Before we begin, sir, we would like to know more about you. Sir, kindly give us a brief introduction about yourself. My name is Zahid Rehman. I come from district Kulgam. I have done my initial schooling from St. Luke's Convent School, Anantnag. Then after that, I qualified in Jammu and Kashmir Common Entrance Test. I completed my Bachelor's of Engineering in Electronics and Communication from Jammu University. And with civil services in mind, I also pursued Masters of Sociology from IGNO. Okay, sir. Sir, as you said कि आपने B.Tech किया इलेक्ट्रॉनिक्स में. सर, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप अपने करियर को स्विच करो सिविल सर्विसेज में? Basically, it was my childhood dream to join the civil services, but it was after passing out from the college. This idea, I started to pursue it with more passion and dedication. In civil services, we see, there is a lot of scope and potential to deliver for the masses. It provides immense opportunities to provide services to the people, and the amount of decision making, which can impact thousands of the lives. So these things, they kind of motivated me to come into the civil services. सर, आपकी प्रिपरेशन में आपने कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ की? आपने क्या अप्रोच यूज़ किया इस एग्ज़ाम के रिलेटेड? आई मीन आपने क्या रिसोर्सेज यूज़ किए? आप वो हमसे शेयर कीजिए. नहीं, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो everything is available on the internet. If we see in terms of the study material, everyone knows the books and the study material which needs to be followed for this examination. For example, Lakshmikant मैंने polity के लिए study की, then Spectrum for modern history. Similarly, NCRTs for geography, and all these books, these are available on the internet in terms of the in terms of the PDFs also. So the material or the notes which I followed, they are available on the internet, and everyone knows about them. But the strategy, which strategy is most important, because everyone knows the study material, but it is a strategy which helps one to get through the examination. I tried to make precise notes of all the books, and my strategy was always to stick myself to the minimum resources and then to revise as much as possible. थैंक यू सर. राइट सर. सर, आपको क्या लगता है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए मेंटरशिप कितनी इम्पोर्टेंट है? मेंटरशिप क्या रोल प्ले करती है इस एग्ज़ाम में? मेंटरशिप, इट इज़ इम्पोर्टेंट. ये हर किसी फील्ड में इम्पोर्टेंट है, बीट स्पोर्ट्स, बीट एकेडमिक्स और बीट दीज एग्जाम्स. तो मेंटरशिप, इट्स लाइक दैट GPS which shows you the right track at the right point of time. Without mentorship also लोग कर पाते qualify, but with mentorship, the journey gets a bit easier. राइट सर. सर, आपको हमारे मेंस में एक पेपर होता है ऐसे पेपर. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं उस पेपर के रिलेटेड. आपने क्या अप्रोच अपनाया था ऐसे पेपर के लिए? एक स्टूडेंट कैसे स्मूथली वो पेपर कर सकता है, कैसे मार्क्स कैच कर सकता है उस पेपर में? अगर हम ऐसे पेपर का देखते हैं तो लास्ट टाइम व्हेन आई रोट द ऐसे पेपर आई वाज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट. तो वो गलती नहीं करनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पीपल शुड लर्न फ्रॉम दिस. मतलब उस टाइम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है ऐसे में, बिकॉज एवरीवन थिंक्स कि ये बहुत सिंपल है, आसान है, तो कर लेंगे, बट एग्ज़ाम में फिर टफ होता है. मैंने ऐसे के लिए क्या किया, आई रेफर टू टॉपर्स कॉपीज़ विच आर रेडीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑन वेबसाइट्स लाइक विजन IAS. तो मैंने देखा कि टॉपर्स वो कैसे लिखते हैं, उनका तरीका क्या है. देन आई ऑल्सो जॉइंड एट अ सीरीज. आई रोट फ्यू एसेज. तो उससे मुझे वो फीडबैक मिला वेयर आई नीड इम्प्रूवमेंट, स्कोप कहाँ इम्प्रूवमेंट का, तो उससे मेरे ख्याल से हेल्प हुआ. और बाकी ऐसे के लिए एवरीवन नोज़ कि मतलब वही बेसिक्स कोहेरेंस होनी चाहिए ऐसे में. यू हैव टू फॉलो दैट पेस्टल अप्रोच. यू शुड मतलब हर कोई डायमेंशन कवर करना है, बीट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल, यू हैव टू कवर एवरी डायमेंशन. और वो कोहेरेंस आनी चाहिए ऐसे में कि मतलब जो एग्जामिनर है ही शुड एंजॉय द व्हाइल ही चेकिंग द पेपर. हाँ, वो कंटेंट एंजॉय करना चाहिए.
राइट सर। सर आप ऑप्शनल के बारे में बताइए, आपका ऑप्शनल क्या था? क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी चूज़ करते हैं ये सिविल सर्विस की जर्नी, तो वो अक्सर सोचते हैं कि हम ऑप्शनल क्या लें। क्या उनको ऑप्शनल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेना चाहिए, या उनको अपने ऑप्शनल को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से लेना चाहिए? आप क्या सजेशन देंगे उनको कि कैसे ऑप्शनल चूज़ करें? अगर हम देखें स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ऑप्शनल में 500 मार्क्स हैं, तो दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द फाइनल सिलेक्शन. तो व्हाट आई डिसाइडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब मुझे सिलेक्ट करना था अपना ऑप्शनल, आई वाज मोर ड्रिवन बाय द इंटरेस्ट. तो मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था. तो आई वांटेड टू गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोसाइटी, हाउ सोसाइटी ऑपरेट्स, हाउ अदर इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट. तो मेरा बेसिक यही था कि इट वाज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट. तो आई वुड सजेस्ट अदर्स ऑल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट देखना है. बिकॉज अगर जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तो तब तक यू वोंट एन्जॉय द प्रोसेस. फिर वो स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा. आजकल क्या ट्रेंड है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, कि उसमें ये स्कोरिंग है, दिस दैट. बट आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंटरेस्ट देखना है. अगर आपका इंटरेस्ट है तो देन यू विल एन्जॉय द प्रोसेस. फिर कोई भी ऑप्शनल लो, हर किसी ऑप्शनल में सिलेक्शंस होती है. आई थिंक फर्स्ट इट शुड बी दिस आपका ऑप्शनल क्या रहा है सर? सोशोलॉजी. सोशोलॉजी. आपने क्या सोर्सेज यूज किए सोशोलॉजी पढ़ने के लिए सर? सो Last- दैट कि सोशोलॉजी ऑप्शनल जिनका उनको भी हेल्प हो जाए. लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे सोर्सेज कंसल्ट किए थे, तो बट उससे कोई हेल्प नहीं हुआ. बट दिस टाइम आई ट्राई टू कन्फाइन माई सेल्फ टू वेरी फ्यू सोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ वन फेमस बुक, नितिन सांगवान सर्स एसेंशियल सोशोलॉजी. दैट इज़ उसमें रेडीमेड काइंड ऑफ नोट्स है. तो मैंने वही बुक कवर टू कवर पढ़ी है. फिर जब मेरा वो कंप्लीट हुआ तो फिर उसके बाद देन आई रेफर टू टॉपर्स नोट्स, लाइक नेहा मैम इज़ देयर, अनदर सर इज़ देयर, वो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है. तो मैंने वो नोट्स वैल्यू एडिशन के लिए फिर यूज़ किया. ओके सर. सर आप पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में कुछ बताइए, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, सो दैट कि अगर हमारे जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स है उनको हेल्प हो जाएगी इंटरव्यूज़ के लिए. पर्सनैलिटी टेस्ट, उसमें भी इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फाइनल सिलेक्शन. तो दिस टाइम व्हेन आई एंटर इनटू द इंटरव्यू रूम, तो मुझे लगा कि द मेंबर्स दे वर वेरी कॉर्डियल, मतलब दे वर वेरी अकोमोडेटिव, मतलब उन्होंने कंफर्टेबल फील कराया पहले. तो इट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन सर, ही आस्क्ड मी अबाउट माई इंट्रोडक्शन, देन अबाउट माई स्कूलिंग, and since I was working in J&K Bank also, so chairman sir asked me about basics of the banking. For example, what is CD ratio, what is favorable CD ratio for a bank, ratio of deposits, and such technical terms. Then since I had my option was sociology, then I was asked as a about sociology. For example, one sir asked me how policing is related to sociology. Then there were certain factual questions also related to constitution. And followed by that, I was asked the questions about my district. What are the priority areas which need to be given importance, and what role I could play in bringing transformational change. How technology can play a role in bringing changes in my district. So I answered those questions. Then I was also asked situation reaction questions. There were two experts from IIT, and they asked me the situation reaction questions. For example, one of the questions I was asked that we have only one seat is to be filled, and we have two candidates with same merit. So whom are you going to select? And I think in interview, they do not look about the factual knowledge. They want to see the approach and the thought process behind the words which one speaks there. एक attitude check करते Yes, they हैं वो check the attitude. Right, sir. Sir, as we all know कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप फिर से, तो एक जैसे कैंडिडेट वो 1 साल या 1.5 साल से इस चीज़ के लिए, कोई तो उससे ज़्यादा टाइम से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है. तो अब जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, तो अगर कोई फुली प्रिपेयर्ड भी होता है, उनको भी एक टेंशन हो जाती है कि हम कैसे इस एग्ज़ाम को करें. तो उस टाइम एक महीने में वो कैसे अपने सारे सिलेबस को ब्रश अप कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को एक ना छोटे टाइम में सारा रिवाइज कर सकते हैं वो. टू फील नर्वस या ये प्रेशर वाली बात, तो एवरीवन गोज थ्रू इट. बिल्कुल, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है. बट जब टाइम कम रहता है उस टाइम, यस, फॉर एग्जांपल दे विल ओवरकम देयर स्ट्रेस लेवल. सी दे डोंट, उस टाइम आपको नए ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं जो आपने पढ़ा है. यू नीड टू ब्रश अप दोज टॉपिक्स, यू नीड टू रिवाइज दोज टॉपिक्स, एंड इफ पॉसिबल दे कुड ऑल्सो जॉइन द टेस्ट सीरीज to solve the previous year questions. PYQs, they are readily available. तो उस टाइम मेरे ख्याल से रिवीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्राइंग टू स्टडी न्यू टॉपिक्स. राइट सर.
Right, sir. Sir, we are planning to launch a program for 11th 12th arts as well. हमें बहुत सारी क्यूरीज भी रिसीव हो गई 11th 12th आर्ट्स के रिलेटेड और उन स्टूडेंट्स से जो जिनका गोल IAS KS क्रैक करना है। सर, आप उन स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि वो अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करें? वो अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स तो नहीं है जो उनको अपने स्ट्रीम में चूज़ करने हैं? इफ़ यू सी दिस एग्जामिनेशन, इसमें पूरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। तो वो पर्सनैलिटी वो एक दिन में डेवलप नहीं होती, इट टेक्स टाइम। एंड इफ समवन फॉर एग्जांपल हु इज स्टडीइंग इन 11th और 12th, अगर वो इस टाइम से ही डिसाइड करे कि ही वांट्स टू गो इनटू द सिविल्स और एनी अदर स्ट्रीम, आई थिंक इट इज़ राइट टाइम टू थिंक ऑन दोज लाइन्स। बट विद दैट अपना जो मेन कोर्स है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वन शुड गिव बेस्ट इन दैट। तो it and one should have inquisitive mindset right from this early age, so that will help. सर, आप अपने बारे में बताइए, how has your life changed since qualifying the JKS exam? Well, I would say qualifying this examination, it gives a lot of recognition. People, they look up to you, people see you as an inspiration. So usse it is a motivating factor. If people, they look up to you, they want to achieve things like you have done. So it kind of it's a motivating factor for those who qualify it. Right, sir. Sir, at last, any advice you would like to give civil service aspirants who are currently preparing for this exam? One advice would be have patience. This exam demands perseverance and patience. And if we see the cycle of the examination here in JNK, it takes time. And one should have patience. One should not, and above all, one should have faith in oneself. And one should always keep on trying with full sincerity and dedication. I think if one is sincere with his efforts, maybe it might take a bit more time, but if one is sincere, it's easily possible to qualify this examination. Right, sir. Thank you so much, sir, to be here today. Thank you so much for joining us today.